welcome to the ADTV Auto Show. We are at Bharat Mobility Global Expo 2025, which was inaugurated by Prime Minister Mr. Narendra Modi, and then Maruti quick started the show by unveiling its first electric vehicle, that's e-Vitara. Let's go see how it looks like. One of the biggest unveil of Bharat Mobility Global Expo 2025 is here, and that's Maruti Suzuki's e-Vitara. We saw this launch unveiled globally a little while back, and now it's finally in India. And what's special is that this product is going to be made in India for the world. Yes, e-Vitara is going to be exclusively made and produced in India and will be exported across the world. And of course, it will be very soon see a launch in India as well. When you will see the launch happening, you will see two battery options, 49 kilowatt hour battery and 61 kilowatt hour battery. You will also have two power output options, 140 HP and 180 HP. Promised range is over 500 kilometers. But what's special about this product is the strategy that Maruti Suzuki is adopting. First of all, they are going to have fast charging stations to start with from 100 cities, and though gradually they will expand this network. Their aim is that every 5 to 7 kilometers, Maruti customers should have an option of charging their product. Now, there is some more interesting stuff that Maruti has done. First of all, this is the first ever product from Maruti that gets ADAS level 2. This also gets 7 airbags. Yes, Maruti has given clear focus on safety. e-Vitara is based on a completely new Heartect E platform. Now, this platform is a born electric platform. The wheelbase that you get here is 2700 mm, and now if you see the look of the front, it will remind you of Brezza a little bit. A really wide bumper area here, and then closed off grille, some piano black in the center, and Suzuki's logo here. The headlamps look very interesting, especially you can see the turn indicator make a very interesting pattern, and of course you get LED projector type headlamps here. Overall, the front looks quite aggressive. Let me show you sides as well. On the side, you get these 18-inch aero alloys. They look quite interesting. And let me also show you the charging point. You get the charging point here up front. Now, if you see, this one is in dual tone. You also get some black cladding down below, and this has a little sloping roofline, shark fin antenna in the middle. The rear at the first look looks a little bit over designed to be. Just look at the bumper area, too many cuts and creases, too many crevices, but that's what you get here. No connected tail lamp. You get this interesting graphic pattern here for the tail lamp. Let me also show you the decent amount of boot space here, and the front seats, these second row seats, flat fold, so you can make more space. Let me just go quickly take you inside now. So on the second row, the seats feel quite comfortable. However, I find the thigh support to be a little less for me, actually quite less, but there's good amount of leg space here, good amount of knee room, foot space, so you can sit comfortably. You get your AC vents here and two charging ports here. These are one USB Type A and one Type C. There is a sunroof, but it's not panoramic. I think if it would have been a panoramic sunroof, it would have added a little bit more premiumness to the cabin. There is this scooped out area for a better headroom space, but if you move forward, the headroom gets a little limited. But the seat can be adjusted. It can be pushed forward and backwards. The seat, as I said, folds flat, and then you can make more space for luggage. There is a little small pocket here in the passenger seat, and there is a nice textured element here on the door, which adds a little premiumness, and you get piano black material here as well. Plastic quality feels all right. The roof lining is also pretty decent. The feel of the cabin looks pretty premium. What also adds to that premiumness is this leatherette, though there is a bit of fabric being used here. There's this chocolate brown and black combination, looks nice. Now I'll take you to the front. Up front, you will notice very interesting treatment of the AC vent with this
shiny grey material being used here. And but the good thing is you do get some buttons. AC controls are here, and then you also have your volume control as a knob here. I really appreciate these physical buttons for your HVAC and volume control. The center console is all in piano black, looks nice, gives the cabin a little premiumness. You also have a little space underneath the center console because this is an EV, so you do get some space here. There is decent amount of space under the armrest. Armrest is not movable, feels a little low. You have this very modern treatment of the two screens. Your touch screen and your driver display have been put in one screen. They look like they are one screen. You also get electrically adjustable seats for driver side, not for the passenger side, but you do get that for driver side. And the steering is not just tilt adjust, it's adjustable for telescopic reach as well. So these are some of the features. I will also want to show you the start stop button here, which has the silver accent on the sides. Looks nice. So that's the modern touch that has been added to e-Vitara. I think looks like an interesting product. We will wait for the price. I think the strategy that Maruti is adopting of covering a lot of space, a lot of cities, lot of touch points for charging, for service, I think that's going to change the way people approach EVs. I think Maruti's entry is going to be pivotal in India's adoption to EV. Tata Motors has been advocating electric cars since long और आज एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 उन्होंने एक और नई इलेक्ट्रिक कार दिखाई है. वेल इट्स द हैरियर ईवी, जिसका कॉन्सेप्ट वर्जन हमने कुछ साल पहले भी ऑटो एक्सपो पर देखा था. बट दिस इज द प्रोडक्शन स्पेक मॉडल. इनफैक्ट प्रोडक्शन स्पेक नहीं, ये उसका स्टेल्थ एडिशन है, यानी कि इसमें प्रोडक्शन स्पेक से भी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस मैट ब्लैक पेंट स्कीम. ग्रिल आप देखोगे ये प्रोडक्शन स्पेक जैसी है, क्लोज्ड ऑफ ग्रिल है, कनेक्टेड एलईडी DRLs मिल जाते हैं. लेकिन अगर आप इसको आइस वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो जो लोअर पार्ट है बम्पर का, उस पर एक अलग ग्रिल मिलती है आपको, विच इज डन इन सैटिन ब्लैक. अलॉय व्हील्स 19 इंच के हैं, स्टेल्थ एडिशन पे अलग मिलते हैं, रेगुलर मॉडल पे मिलते हैं एरोडायनेमिकली इंप्रूव्ड व्हील्स. 5 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं. यहाँ पर आपको साइड स्टेप्स भी मिल जाते हैं. और अगर आप इसकी छत की ओर देखेंगे तो आपको थोड़े से प्रोनाउंस रूफ रेल्स मिलेंगे और उन पर 2 ऑक्सिलरी लैंप्स भी लगाए हुए हैं. बट क्यों लगाए हैं ये? वेल द आंसर इज दिस बैच दैट यू सी ओवर हियर, इट रीड्स QWD ऑल ड्यूअल मोटर. तो इस गाड़ी को ड्यूअल मोटर्स मिलते हैं. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज ऑल व्हील ड्राइव सेटअप. बैटरी की बात करूँ तो अप टू 60 किलोवाट आवर्स के बैटरी पैक आपको इसमें मिलेंगे एंड अप टू 500 किलोमीटर्स की रेंज एंड पीक टॉर्क इज व्हाट टाटा मोटर्स इज क्लेमिंग on this. इंटीरियर्स में वही सेम बिट्स, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ देखने को मिलेगा. आपको मिलेंगी फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 ADAS एंड लॉट मोर फीचर्स. आई मीन ऑल ऑफ दोज फीचर्स दैट यू हैव सीन ऑन द आइस मॉडल्स ऑफ द हैरियर. बट जो अच्छी बात मुझे लगी कि इसका लॉन्च इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ. Vietnamese brand VinFast is ready to launch VF7 and VF9 in the country. लेकिन they also have the cutest car at the Auto Expo and it is called the VF3. थोड़ी थोड़ी MG Comet, थोड़ी थोड़ी मारुति सुजुकी जिम्नी, थोड़ी थोड़ी बाउजोन जैसी दिखती है, लेकिन एनीवेज लगती बहुत क्यूट है. गाड़ी का नाम है VF3, एक छोटी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार. डायमेंशंस की बात करें तो 3190 मिलीमीटर्स लंबी है, 1679 मिलीमीटर्स इसकी विड्थ है और हाइट है 1652 mm, यानी कि कॉमेट से भी थोड़ी छोटी है ये गाड़ी और ऑल्टो से तो बहुत ज़्यादा छोटी है. व्हील बेस सिर्फ 2 मीटर्स का. अब मुद्दे की बात, इसके अंदर मिलता क्या है? इसके अंदर मिलती है 30 हॉर्स पावर वाली एक मोटर, 110 न्यूटन मीटर्स वाला एक अगेन मोटर, और ये 0 to 50 kmph करती है 5.3 सेकेंड्स में. फास्ट चार्जिंग 10 से 70% सिर्फ 36 मिनट. रेयर व्हील ड्राइव है ये गाड़ी, लेकिन इंटीरियर्स बहुत स्पेशियस मिल जाते हैं. आपको अंदर मिल जाती है एक बड़ी 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन. आप इसकी छत पर 50 किलो तक सामान लाद सकते हैं और बूट स्पेस में आपको 285 लीटर का वॉल्यूम मिल जाता है व्हेन बोथ सीट्स आर फोल्डेड डाउन. अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इसकी रेंज कितनी है. तो 215 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है फुल चार्ज पे.
बट क्योंकि SUV जैसी दिखती है तो आपके जहन में आएगा एक सवाल कि ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। तो 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि एकदम क्रेटा जैसी है। डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एकदम क्यूट सी कॉम्पैक्ट SUV वाइब देती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे करियर में मैंने सबसे पतले टायर अगर किसी गाड़ी में देखे हैं तो वो है इसमें ओनली 175 सेक्शन टायर्स। साइड प्रोफाइल 75 एस्पेक्ट रेशियो रखा है, लेकिन ये टायर 16 इंच के हैं। इतनी छोटी गाड़ी में 16 इंच के टायर्स का मतलब है कि राइड क्वालिटी जो होगी वो होगी काफ़ी ज़्यादा कुशी। अब आपको इस गाड़ी का डिज़ाइन कैसा लगा, इसके स्पेक्स कैसे लगे, वो हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। Because as of now, VinFast has no plans to launch this car, but it might come soon if they get the right interest for this car. As of now, I'm your host Mohit Bhardwaj. I'll take a leave on this note कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की आपको जो भी अपडेट्स चाहिए वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट और ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ करिए इस वीडियो को शेयर, क्योंकि गाड़ी है तो देखो क्यूट। इफ़ यू प्लानिंग टू बाय द हीरो एक्सप्रेस, मेरी एडवाइस होगी रुक जाओ, थम जाओ, क्योंकि यामाहा ने यामाहा लैंडर शोकेस कर दी है एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। अब ये है एक ड्यूअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल। आपको यहाँ क्या कुछ मिल जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सामने की ओर 21 इंच का स्पोक व्हील, पीछे की ओर 18 इंच का स्पोक व्हील, उसी के साथ आगे जो सस्पेंशन है दैट्स अ टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, आपको देता है 220 मिलीमीटर का ट्रैवल। रेयर पे एक मोनोशॉक जहाँ मिलता है 204 मिलीमीटर का ट्रैवल। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 240 मिलीमीटर्स की। सीट हाइट है 875 मिलीमीटर्स की। बात करी जाए पावर प्लांट की तो 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर मिलता है एंड दिस इज एन एयर कूल्ड यूनिट। ये बनाता है 20.5 हॉर्स पावर और 20.1 न्यूटन मीटर। इनफैक्ट ये इंजन पहले FZ25 में भी आता था। अब इस बाइक के डिज़ाइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सामने की ओर आपको एक पीक मिल जाती है, एक फेंडर मिल जाता है एंड दिस टायर इज रिलेटिवली वेरी स्लिम। वाई सो? ताकि इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके। आपको कोई एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलते हैं, बट एक छोटा सा TFT LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और हैलोजन मिलते हैं आपको टर्न इंडिकेटर्स। Front lighting is LED and the good part about this motorcycle is कि fit and finish levels काफ़ी ज़्यादा लगे मुझे अच्छे। We are at the BMW Motorrad stall at the Bharat Mandapam 2025 and with me is the F450 GS concept. Well, this was showcased at the EICMA last year, makes its public showcase in India at the Bharat Mandapam. You can come have a visit. Well, let me quickly take you through what's there, what's silent about this motorcycle. First and foremost, we see a new engine debut with this concept. Well, let me tell you, this motorcycle is hitting the roads by the end of this year. Expect the launch in India somewhere in the early phase of 2026. Now, this engine is around 450cc. It's a twin, should make around 48 horsepower is what BMW says at this point in time. In terms of design, you can see this is inspired from the GS, the higher capacity GS motorcycles. The beak especially looks or resembles more like the 1300 top of the line GS motorcycle, that cross shape on the LED structure. Well, in terms of hardware, you can see up front there is cross-spoke, rear cross-spoke tires. This is 19 inch. The rear is a 17 inch. These tires, you can see these are proper knobby tires. And in teaser videos, we have seen this bike really attack corners and dirts with ease and aplomb. The seat, see, at this point in time is a single piece seat with a luggage pannier at the rear. There's a good hump for the tank space. Right in the middle, surrounding this engine is a steel trolley frame, and the engine will be paired to a 6-speed gearbox. Up front, it's a upside down fork, and these golden covering really give it nice appeal. Now, this GS structure looks really handsome. Also, it's an upswept Akrapovic exhaust. Overall, this motorcycle does look really menacing and should be competing with the likes of the KTM Adventure and the Himalayan 450. However, the price could be on the higher side whenever this is launched. Also new to this motorcycle is a 6.5 inch TFT display. This will debut with this motorcycle. Also, the windscreen here, you can see there's one, but it's not all that big. It's a short windscreen. Maybe with the production model, there will be accessory. The tank has got a hump. It flows nicely into the seat.
Overall, the weight of the motorcycle should be somewhere around 175 kilograms. Whenever this is launched, it gets dual channel ABS from Brembo. The calipers are from Brembo. There are few very interesting bits about off-roading. For example, you can see these knuckles. These are very off-road specific foot pegs given here. The tires, you can see these are proper knobbies. Overall, there is good meat to the motorcycle. Looks like a proper middleweight adventure motorcycle. Well, you can have a look at this motorcycle at the Bharat Mandapam 2025 at the BMW Motorrad stall. We are really excited about this. Whenever this is launched, we expect the price should be somewhere around 4.5 to 5 lakh rupees ex-showroom. While you guys were on a break, I found myself a perfect companion for taking a break, and that's this caravan. Equipped with a full-fledged bedroom, bathroom, area for cooking, a balcony and this lounge area. We will get you a proper walk around of this caravan on NDTV Auto's YouTube channel. But this is no time to take a break because there's so much happening at Bharat Mobility Global Expo 2025 and we have got to show you many more exciting vehicles. Take a look. The Hero Express has been quite a successful model for Hero MotoCorp, and right now we have with us the Hero Express 210, which was first showcased at the 2024 EICMA Motorcycle Show. And firstly, look at the design of the motorcycle, very different from the Express 200. So the fuel tank is new and so are these side panels. Look very nice, very muscular and ready for an off-road adventure, right? So the seat is a single piece seat and it is quite tall, and if I were to sit on it, you can sit on it, not a problem. Very comfortable ergonomically, and you have this nice 4.2-inch screen here, not a touch screen, but with a nice crisp display. And you have the switchgear here, feels very premium and tactile. Talking about the engine, the motorcycle gets a 210cc single-cylinder liquid-cooled engine, makes around 24 odd horsepower and 20.7 Newton meters of peak torque, paired to a 6-speed gearbox with a slip and assist clutch. And if you were to talk about the suspension, the front end is a 41 mm regular fork with 210 mm of travel. At the rear is a monoshock which also gets 205 mm of travel. A 21-inch wheel up front, as you can see, and an 18-inch wheel at the rear, ready for all your off-road adventures. And like I said, ergonomically it's very, very comfortable. It has been launched in India at 1,76,000 rupees ex-showroom. Alright, so here's another blockbuster from Hero MotoCorp, the Zoom 160. It is the first maxi scooter from Hero and it has been launched in India at a price of 1,48,500 rupees. It gets a 156cc single-cylinder liquid-cooled engine, makes around 14.5 odd horsepower and 14 Newton meters of peak torque, is paired to a CVT unit. It is automatic, of course. And just look at the design of the scooter, very, very muscular. It has a nice road presence, right? What are your thoughts? Do let us know in the comments below. And if you just come and sit on the scooter, very, very comfortable. Just look at these footboards here. Very, very nice. You have enough space to keep your foot. You can keep it like this as well. You have the multifunction smart key here, right? And look at the switchgear. Looks very premium, well finished. And there's the screen as well. It's switched off right now and looks nice. And you have this nice sense of heft to the scooter, right? The seat itself is very, very comfortable. So this is a stepped seat. So you have this cover here. You can see there's a nice gap here. So really nice, wide, comfortable seat, and it looks really good. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में सरप्राइजेस तो हमें काफ़ी मिले हैं, बट आई थिंक दिस सर्टेनली इज़ अ बिग वन. नाउ यू आर वंडरिंग व्हाट इज इट. आई विल ब्रीफ यू अबाउट इट. ये है तो TVS जुपिटर 125, लेकिन ये है CNG वाला जुपिटर. अगर आप इसकी डिग्गी को खोलकर देखेंगे, यू वोंट सी एनी लगेज और द बूट स्पेस ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर एक 1.4 किलोग्राम का सिलेंडर फिट किया गया है. पेट्रोल की कैपेसिटी रखी गई है 2 लीटर पे और इसका इनलेट है यहाँ पर. अगर आप देखेंगे यहाँ से आप CNG फिल कर पाएंगे इसमें. और मुद्दे की बात करते हैं कि ये स्कूटर की रेंज कितनी है. तो 1.4 किलोग्राम ऑफ CNG, 2 लीटर पेट्रोल, ये चलेगा लगभग 220 किलोमीटर. अब
बाकी की स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 125 सीसी का इंजन रखा गया है जो बनाएगा 7.2 HP और 9.4 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। टॉप स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और CNG पे माइलेज है 84 किलोमीटर टू एवरी किलोग्राम ऑफ CNG दैट यू विल फिल इन। उसी के बाद एक और बड़ी बात, अब इस स्कूटर में आप CNG पर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट मिल जाती है। फ्रंट की बात करूँ तो LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। जो बॉडी की पेंट फिनिश है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड यू ऑल्सो गेटिंग अ लार्ज लेग स्पेस विद अ सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर। अब आते हैं इसके कॉकपिट पर, तो आपको यहाँ पे मोबाइल चार्जर की सुविधा मिल जाती है। एक लगेज हुक यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ से आप पेट्रोल भरेंगे एंड दिस इज़ द मोबाइल चार्जर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आप CNG पर शिफ्ट कैसे करेंगे। वेल हियर इज़ अ स्विच। इस स्विच की बदौलत आप इसको पेट्रोल और CNG मोड में स्विच कर पाएंगे एंड दिस कम्स विद ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम एज वेल। अभी TVS ने प्राइसेस नहीं बताए हैं बट आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू बी अनाउंस सून एंड माइंड यू गाइस दिस इज़ द फर्स्ट CNG स्कूटर इन द वर्ल्ड। तो एक्साइटिंग तो ये ज़रूर है। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप भी एक सस्ता रनिंग कॉस्ट वाला स्कूटर लेना चाहते हैं, आई एम श्योर दैट दिस विल मेक सेंस टू यू इन ऑल एस्पेक्ट, क्योंकि TVS बोल रहा है रनिंग कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 2 rupees to a kilometer। Well, this was all about the Jupiter CNG और हमें फॉलो करते रहिए to get more updates from Bharat Mandapam for the Bharat Mobility Global Expo 2025. For now, I'm your host Mohit Bhargava. I'll take a leave. Take care. This is Škoda's concept Vision 7S. Very interesting concept. It's a 7-seater. It has a separate seat for a child. Interesting. And there are many such interesting products on display at Bharat Mobility Global Expo 2025. It opens for public from 19th January. If you are in Delhi, do visit it. And if you want any details about this expo, you can log into ndtv.com/auto. We have all the information that you need. I'll see you next week. Till then, take care. Bye-bye.